Annyeonghaseyo. Hi everyone. In today's lesson, we are going to study about itta and how to use it in sentences. But before we begin, please don't forget to hit like and subscribe to my channel. So, let's start. Itta basically means to have something or to be at a location. It is a root form, that is the dictionary form, but we have to convert it into the simple present tense, means we have to conjugate it. So when we want to use it in a simple present tense sentence, we will convert itta into issoyo. Issoyo. So basically here the da, okay, da gets कन्वर्टेड टू ओयो. तो ये जो दा जो है ये हट जाएगा एंड द वर्ड बिकम्स इज सोयो. सो अनदर थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ ई एंड गा. सो अगर कोई वर्ड है और वो वर्ड के आगे हमारे पास इसोयो है, तो उस वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही है तो एंड में उसमें ई लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, 저는 펜이 있어요. Here we have pen. ओके, सो पेन जो है इट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, तो इसके बाद में हम ई लगाएंगे. सो इट बिकम्स 저는 펜이 있어요. बट अगर कोई वर्ड है जो इसोयो के साथ है और वो वर्ड एंड होता है वावल में, तो उस वर्ड के एंड में हम गा लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, 저는 차가 있어요. 차 is a car and cha ends with a vowel. That's why we add ga in it. Instead of having the meaning of I have something, that I have a car, I have this, I have that, ये जो इसोयो है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि there is something, means I'm not saying I have something, maybe I saw something in the park and I'm simply saying that maybe there is a baby in the park, okay, there's a baby or there's a book. So it depends on the context what I'm trying to say. So one example is 아기가 있어요. It means there is a baby, और it can also mean I have a baby. It's just that यहाँ पे छौनन को ड्रॉप कर दिया है. तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मे बी आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर इज़ अ बेबी, आई सी अ बेबी समवेयर, और आई एम माइट बी ट्राइंग टू से दैट आई हैव अ बेबी. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्वर्जेशन दैट आई एम हैविंग विद समबडी. The other sentence is 책이 있어요. 책이 있어요 means there is a book or I have a book. But remember, if 저는 is there, specifically अगर 저는 added है, 저는 아기가 있어요, it means I have a baby. It does not mean there is a baby because I have added I have a baby. Similarly, in this sentence also, if I add 저는, it means I have a book. Okay, so it specifically would mean this only. 저는 책이 있어요. I have a book. So, this was the end of the video. If you liked it, please don't forget to hit the like button and subscribe. Annyeong!